ऐसे बैठते हैं तो ये इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ता है, वो धीरे धीरे. He makes a whole drawing. Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. मेरा नाम जोश है. मेरा नाम मिगेल है. और हम पीकू देख रहे हैं. ये पार्ट 2 है, तो अगर पार्ट 1 मिस हो गया फिर इस वीडियो के नीचे उसके लिंक मिल सकते हैं और देखकर वापस आइए पार्ट 2 के लिए जो अब भी हम देखेंगे. और अगर अब तक नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन पर थप्पड़ मारो. टैक्सी का बिजनेस कब से करता है? मेरे फादर का बिजनेस था, उसे संभाल लो. लगा दिया बिजनेस में तुमको पैसा कमाने के लिए. अरे नहीं जॉब था मेरा, सऊदी सिविल कंस्ट्रक्शन. ओहो, इंजीनियर बनने के बाद टैक्सी बिजनेस. इंटरव्यू में बोला कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है. वहाँ पहुंचा तो कंस्ट्रक्शन साइट पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट में लगा दिया. Why did you not come back? पासपोर्ट उनके पास था, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था. Oh, we saw remember the Saudi thing in the Goat Life, Adu Jividam? तुम इतना मुंह लटा के क्यों बात करता है? अगर तुम सही था तो why do you feeling sad की नौकरी से निकाल दिया? दुनिया में जितना ऑनेस्ट लोग हैं सबके साथ ऐसा ही होता है. तुम्हारे साथ कोई अलग नहीं होगा. मेरा तो सिंपैथी तुमको मिलेगा नहीं. भाई पीकू का सिंपैथी लेने का जरूरत नहीं है, जानो. Why would I care? Man, they're just the masters at creating uncomfortable feelings in the car. Oh, jeez. Feeling very claustrophobic right now. I mean, personally, if I were with him, I wouldn't be talking much at all. Saraswati. Ignore him. Put some radio on. And now you know why some taxi drivers have the glass in between and they're like, I don't see you, I don't hear you. Unless you're on fire and back there, I don't care. सर देखिए ये क्या है, ये तुलसी है. इसको पानी में बॉईल करके पीजिए, सब ठीक हो जाएगा. तुमको कैसे मालूम? बॉईल करेंगे, फेंक दूं. इसको लेके जाओ, पानी में बॉईल करो. Did he just go pick that from the field? लखन 112 में लेके जा. बोधन दवाई रेडी रखना. बाबा आप जाओ, मैं आती हूँ. पीकू कोता है? She's like, I need a break. तुम सुबह तेज किससे बोल रहे थे? Not you. मेरा नॉट. तो गाड़ी से बाहर फेंक देती हूँ. तो बाबा कलकत्ता कैसे जाते? मैं ड्राइव करके लेके जाती. ओह, आपको ड्राइविंग आती है? बताया क्यों नहीं? थोड़ी देर मैं भी पीठ सीधी कर लेता. सुबह किसी से लड़ रहे थे, ऋतु. मेरी बहन, और उससे भी खपती मेरी माँ. तुम इन्हीं की लड़की हो? हाँ, मैं इन्हीं की लड़की हूँ. और मैं इनसे 10 times ज़्यादा strange, weird, irritating. I didn't mean that. No, I know what you mean. I wonder if she doesn't like driving because her mom and sister died in an accident. Maybe. अरे एक कमरा चाहिए. हेलो. सब फुल है. हमारे बंगाली फैमिली आया ना, आधा फैमिली अंदर है. हमारा नहीं. रूम्स अवेलेबल नहीं, बोला टूरिस्ट है वो. बहुत आदमी गाड़ी में ही सो रहे हैं. अरे मैं ओनर हूँ, ड्राइवर नहीं हूँ. बुधन के बगल में सो जाऊँगा. Oh, that's his thing. सुनो. यहीं पे सो जाओ. हाँ, वही तो मैं कह रहा था. Thank you. Oh, jeez. I would have been so disappointed. लाइट ऑफ करो. कपड़े तो चेंज कर लो. बिना आवाज के नहीं कर सकते क्या? हाँ, चुपचाप करो. Okay. You get to know a lot about people when you travel with them. Yeah. And also that's why he wanted him to not sit in the front passenger seat. Is because he's like, I'm the owner. And then he's like, I'm not going to sleep in the car next to your work help. आप इंडियन स्टाइल में बैठते हैं कि वेस्टर्न स्टाइल में? ना, what do you mean? इंडियन स्टाइल तो अभी होता किधर है आजकल? इससे अच्छा और साइंटिफिक तरीका हो नहीं सकता है पेट साफ करने. राना प्लीज. नहीं, कॉन्स्टिपेशन का पहले इतना प्रॉब्लम कहाँ होता था? नहीं होता था. नहीं ना. सर लेट मी एक्सप्लेन यू. इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. Yeah, I've seen the diagram. ये ऐसे बैठते हैं तो पेट पे प्रेशर आता है, तो ये इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ता है. और फिर पाइपलाइन में जितना वेस्ट मटेरियल है ना, वो धीरे धीरे. He makes a whole drawing. ट्राई करें. कहाँ? इधर? इधर नहीं. ना. गिर जाएगा तो. I want to reach Kolkata safely. पापा को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है. He cannot do this stunt. Fine. जब तुम लोगों का ये तमाशा खत्म हो जाए ना, मुझे बुलाना. सर जाने दीजिए इधर, अपन ट्राई करते हैं. हाथ तो धो. Yes. I mean, some of the toilets that they make with a wider stance and then almost like foot pedals up there on the side so that you have proper spot for your feet. Don't think अपने home remedy से you can impress him or me. We know everything about constipation. Oh yeah, obviously.
They're like, we talk about it 24/7. So we know everything about it. Do all the Googling. आपके भालो लगने नहीं लगने से क्या होता है? जब टाइम आएगा तो मरेंगे, सड़क तो सड़क, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल। डेथ और शिट, ये दो चीजें किसी को कहीं भी कभी भी आ सकती हैं। अच्छा ड्राइवर के लिए पेशेंस इज ए मार्क। आई वाज जस्ट टेस्टिंग, दैट इज ऑल। So definitely we can see where she gets the unapologetic thing, you know, because he'll never apologize for anything. No. कलकत्ता में कौन-कौन रहता है? काकू काकी एक्चुअली माँ बाबा में हम तीनों वहाँ रहते थे पहले। एक दो रिलेटिव्स जिनसे आई हैव नो कनेक्शन एंड दैट हाउस। हाँ, जिसको तुम बेचना चाहता है और हम बेचने नहीं देगा। You know, it's interesting when they do these images of her looking out the window and everything. She looks very much like a little girl. Whole night we were just away. काकू ही इज राणा चौधरी। नमस्कार मिस्टर चौधरी, बोलो। ही इज नॉट बंगाली, विनोद। हिमाचल टैक्सी स्टैंड के ओनर है, वो ड्राइवर नहीं आया तो ही ड्रोव अस। अच्छा, माने दिल्ली का लोग उतना भी बुरा नहीं है। Oh, listen to that, throwing shade. अच्छा वो कुर्सी उतरवा लो, देन आई लीव। भाई तुम वापस दिल्ली जाने का तो नहीं सोच रहा है? नो नो नो, तुम टायर्ड होगा। वो सुबह जाना, तुम गो इन द मॉर्निंग। नहीं बेकार में तकलीफ होगा, मैं निकल नो जाऊंगा। वन आस्क्ड यू। Jeez. He has not told me anything. Cano? अरे क्या हुआ? Nabendu is saying दादा घर का डील करने के लिए आया है. I am not surprised. फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत गड़बड़ करता है। फ्रस्ट्रेशन होने से Negativity. हाँ वही, ये जो नेगेटिविटी होता है इनसाइड, और नेगेटिव इनसाइड होता है, उसके बाद डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। He's looking at him, dude. You're talking about negativity and your insides. आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं? ये हर बात पेट से जुड़ा है। आदमी का इमोशन उसके मोशन से जुड़ा हुआ है। दादा आपको रिलैक्स करना अरे चाहिए. रिलैक्स। अरे तुम भी ना बोलो ना। जानिश पीकू, तेरे काकू कितने घंटे बाथरूम में बैठा रहता है? हम बाथरूम में देर तक बैठा रहता. फिर भी इनको 2 बाल्टी पानी चाहिए अलग से, क्योंकि वो जेट स्प्रे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ना, दैट इज बिकॉज वो जेट का पानी बहुत शार्प होता है, मालूम, इधर हट करता है। और विंटर में गरम पानी चाहिए। Who uses गरम पानी क्लीन दैट पाछा? अमेरिका में हर तीसरे आदमी को ये प्रॉब्लम है। इनफैक्ट उनका सबसे बड़ा हेल्थ इशू यही तो है। फिर भी देखिए कैसे मस्त रहते हैं। Guys, biggest economy है वर्ल्ड का। आई गेस। देखिए जैसे कोई भी नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल मतलब जैसे कि मैं। तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोलता है कि तुम नॉर्मल है? लेकिन वो लोग ऑन एन एवरेज 3 दिन में एक बार जाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, सब जमा होता रहता है, फिक्स डिपॉजिट अंदर पेट में, फिर एक दिन जाके दौड़। आपका उतना बुरा हाल नहीं है। आप एक काम करिए, आप खाने को ऐसे लेके गाय की तरह चबा चबा के खाइए, देख लीजिए नेक्स्ट डे जग मार के होगा। मिस्टर बैनर्जी जी, कभी आपने सुना है किसी गाय या भैंस को कॉन्स्टिपेशन हुआ हो, या हार्ट गोबर, लूज गोबर कभी होता है? Dude, you could say that about so many things. Like, just This because. is turning into philosophy of life around poop. Yeah, this is the constipation of life, man. तो कहीं बाहर चलें घूमने? चलो बाबा को दवाई दे क्या? इतना इमोशनल अटैचमेंट है तो फिर ये घर आप बेचना क्यों चाहता है दादा? You don't need money. कि माथा घुर गया तुम्हार? ब्रिक बाय ब्रिक हम कंस्ट्रक्ट किया ये घर को। चंपा कुछ कभी नहीं बिक सकता। It will never be sold. माँ का नाम है इसमें, चंपा, जानो? But दादा ना ना ना, की मेंटेनेंस नहीं कर सकता, फाइन, आई विल गिव द मनी। Surprised Put her. down. Yeah. He's like, see, I told you. Keep your mouth shut. ए यहाँ एक थिएटर था, कोई बिल्डिंग आ गया। ऐसे ही होता है। तुम भी तो यहाँ घर बेच रही हो, वहाँ भी कोई बिल्डिंग आ जाएगी। मे बी दिस इज द वे फॉरवर्ड। इसी को लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। बट अपनी रूट्स अगर उनको उखाड़ दो तो क्या बचेगा? I mean, Or anything that roots you no matter where you are, such as your father. He roots you because you orbit around him. बाबा का देखभाल करते करते 50 ही हो जाओगी ना? एक मिनट, तुम ऐसा क्यों सुना रहे हो? You know my situation. You know वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। सुनाई नहीं दे सकता ठीक से, आंखें कमजोर हैं। छोड़ दूं अकेले? छोड़ने को मैं नहीं कह रहा हूँ,
छोड़ा तो मैंने भी नहीं अपनी माँ को. I'm just saying. I hope you realize he's a selfish man. No, he's Oh, not. ho, ho. That's a bit of a line. एक एज के बाद पेरेंट्स अपने आप जिंदा नहीं रह पाते, उनको जिंदा रखना पड़ता है. तो अगर किसी को मुझसे शादी करनी है तो तो तुम्हारे 90 साल के बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ेगा. Yeah, basically. Yep. Yep. करोगे शादी? Yeah, let's go. माथा खराब नहीं है मेरा. Yeah, he's like, dude, I've spent 40 hours in the car with you people. No way I'm gonna live in that house. Yep. तेरे मौसा का दार्जिलिंग का प्रोग्राम बना. What? मैंने सोचा तुम लोगों को मिलते हुए मैं भी दार्जिलिंग पहुंच जाऊंगी. तू किधर है? जल्दी आ जल्दी आ. Okay, okay. Yeah, it's gonna be a party now. ओ भागुदा, क्या मूड ऑफ है? अरे आप तो अब कलकत्ते में आ गए हो ना? पिकू के बारे में. सौरभ का शादी हो चुका है. आपको तो कोई पसंद ही नहीं आता. आप थिंकिंग करके क्या फायदा? आई एम थिंकिंग तुम हमारा पीछा कब छोड़ेगा. वो क्या बैडमिंटन? हाँ, क्यों? आपका फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरा सिस्टर है, मदर है और फादर का तो पहले. फादर डेथ हुआ क्या? राना's फादर डेथ हो गया. अभी नहीं हुआ, पहले हुआ. व्हाट इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम में सच कुछ नहीं था. बिना प्रॉब्लम का डेथ हो गया. नहीं मतलब कैंसर था. अच्छा कैंसर तो प्रॉब्लम होता है तो कैसे कह रहा है कि प्रॉब्लम नहीं था. कैंसर था लेकिन उसको रिमूव कर दिया था. मतलब अरे डॉक्टर को पूछना चाहिए था बाबा ना. सबको इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीजों में. आपके लिए तो हॉबी हो गया ये सब मेडिकल नॉनसेंस. Hey, I'm not talking to I'm you. also not talking to you. I am also not talking to you. वो डॉक्टर बोला वेंटिलेटर लगाओ तो मैं क्या करूंगा. मैं मना थोड़ी करूंगा. वो बोलेगा लगाओ तो लगाएंगे. वो बोलो निकालो तो निकालेंगे. मेरे हाथ में क्या है. मैंने बिल्कुल आपका हाथ में है. तुमको पता है तुम्हारा फादर को कितना तकलीफ हुआ. पूरा शरीर में ऐसा नीडल लगाता है, फिर ड्रिप होता है, ब्लड होता है, नीचे कैथेटर लगता है. Dude, what's done is done. Like, नर्स उठाएगा उठो, वो कपड़ा पहनाएगा तो पहनो, वही कपड़ा में अगर मोशन हो गया तो वही कपड़ा में you पड़ा know, हुआ. sometimes Dadu gets in these rants Hey, Piku, as well. हम जब And मरेगा I'll तो just don't do all this with me. I want to die in peace. make him feel so bad. Dude's father died, and you know, you're telling him he tortured him. Is he gonna? सॉरी का जरूरत नहीं है. मैं ठीक हूँ. मुझे बुरा नहीं लगा. मुझे इट्स ओके. He wasn't gonna say it. नहीं सॉरी किस लिए. See, ओए देखो हमारा तुलू पंप नहीं चल रहा है. तुम सिविल किया ना. यू डिड सिविल. देखो तो जरा. देखा हम बोला था वो कर देगा. ये टुल्लू कंपनी बंद हो गया है. पंप चेंज करवा लीजिए. थैंक यू मिस्टर चौधरी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. but of course he's not gonna say thank you. एक दो दिन और रुक सकते थे ना. भाई नो. अरे उसका उधर बिजनेस है, फैमिली है. नो यू मस्ट गो. मैं आपको एक सजेशन दूँ. मानेंगे ना. ये नमक चुराना बंद कर दीजिए आप. नहीं मिस्टर. जाओ. सीधे शब्दों में ये उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दीजिएगा. ठीक है. He knows a secret. नहीं जिस तरह की फैमिली है ना तुम्हारी उसमें कोई तो काम शुरू कर दो. रिलैक्स रहोगी. मैं रिलैक्स. मैं फोन करूँगा. Oh wait, what? What was that kind of like? चंपा कुंज will not be sold. और अगर काको और काकी को ऑब्जेक्शन नहीं है, find a tenant. Okay? Thank you. All right, that's done and over with. You think he enjoys the peace and quiet on the drive home? I think he's being contemplative definitely about what all's transpired. It's actually a very cool photo there. Oh, he's riding his bike. और कैसे गए? और आप लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? But you know him ना पिकू. और तूने साइकिल लॉक क्यों नहीं किया? कल रात को चाबी ले लिया. Ooh, jalebi. You've not had jalebi, right? No, I have not. सब देखा हम. White House building, Dalhousie, Sham Bazaar. ओए इधर हो. कचौड़ी. All my life I have eaten kaddu, karela इनकी वजह से and now he wants to eat this. Jalebi and what not. ऐसे सडनली उठ के आप 25 किलोमीटर साइकिलिंग नहीं कर सकते. आप समझे? You think your lungs are fit to do all this?
Nonsense. She is acting like a mom. मैंने कहा था हम फ्लाइट पे चलेंगे पर नहीं. He wants to go by road only. आज तक कभी सोचा है कि मैं क्या चाहती हूँ? Absolutely selfish. राना बस Yeah, he is. सब कुछ खाना चाहिए. कुछ हुआ? Like never before. अद्भुत. The best motion. So no cycling from tomorrow. तुम लोग सब गुस्सा है. I understand. सबका जाने का रास्ता already decided है. मेरा भी I know even mine. It will be through my digestive tract. मेरा प्राण इधर से ही निकलेगा. इसलिए let me cycle. I am enjoying. She's got to find a way to have her life पिकू and still be able to take care of him, but she needs a देख life. तो दादा को अलार्म बजा लेकिन वो उठा नहीं. मैंने जगाया कुछ बोलते भी नहीं. सुबह आया मैं लाइट जला. दादा उठा नहीं. दादू उठिए मुनी. क्या हुआ दादा? In a way, I guess it's kind of poetic to be back to his home and where he felt comfortable and safe. And he went out with just what he was wanting to do, enjoying himself. He had a super good last day. And he even had full motion. Hey, he had said early on if he had a good motion, he'd die a happy man. That's true. He said it in the very beginning, yeah. बेटी भाई साहब पीसफुल डेथ ही चाहते थे. Yes, uncle. No tube, no ventilator. Yeah. बाबा बहुत खुश थे. He said वो best motion था. बाबा मुझसे अपनी हर बात मनवाते थे, but he made sure death also listened to him. Man, there's got to be so many mixed emotions too, because like obviously she loved him, she cared about him, she took care of him, so she's sad she's gonna miss him. But at the same time, there's like this strange freedom maybe that she's feeling. Well, and that can be really fear-inducing when it's like I'm free to do I'm not sure what. और जो बाबा को जानते हैं दिनों की उनकी एक ही प्रॉब्लम थी, constipation. और जाने से पहले वो भी ठीक हो गए. So Baba's death was a happy one, and I'm going to miss him. सही है. तो तुम क्लोज हो, अच्छी बात है. भाई साहब को लगता क्या श्योर थे वो कि सैयद को भी कॉन्स्टिपेशन है. What? It's It's a marriage proposal based on constipation. Do you have constipation? Yeah, पहले क्यों नहीं बताया? मतलब it's not chronic. Just Piku. what? ये बाकी का बैलेंस अमाउंट और ये पेट्रोल का. और जो गंगा घाट पे पूरी फैमिली को आउटिंग करवाया था उसका कहाँ है? तुम्हारे बाबा ने जो मेरा मेंटल टॉर्चर किया उसका? At least a year of therapy, please. Yeah. मैं जज पेरेंट्स हूँ, चाहे जैसे भी हूँ. कुछ उन जैसे आदमी को संभालने के बाद तुम भी ना रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, उन लोगों की कैटेगरी में आ गई हो. महान औरतों वाली. मेरी जगह कोई और होता तो शायद यही करता. I don't think so. No. आजकल कोई नहीं करता. So now अकेले संभाल लोगी ये सब? I think so. I mean, इतना तो प्रिपेयर करके गए बाबा. दीदी, Oh, she wants her job back now that he's gone. कल से आना. She's like, the angry old man is gone. Can I have my job back, please? But it could be Oh, an what a angry older woman. Oh, what a great way to end that. So, but now they were playing badminton together. Yeah. Bashkor was their name, and they were changing it to
No, they just misspelt it. Right. They put an A instead of an O. Yeah, but it was an O the whole time. Right, but she was going to rent that house? No. Oh, the house in Kolkata. She said find a tenant for the house in Kolkata. Right. To help with some of the Right. fees. But on their house, why were they changing the name? I think they were just updating it because maybe it was his initial or something and then Bhaskar. But then they were updating it to maybe be her initial because he's no longer there. I don't know. I didn't catch it. Okay. Yeah. Wow, that was unexpected. Like I did. Yeah, I didn't know what to expect actually, but from the cover art of the movie, because whenever I look these up where it's streaming, I see a poster of it, and it showed like them in the car, right? Like, or standing by the car. So I'm like, okay, road trip, like road cool, trip, like a fun road trip. Yeah. This was not that. No. This was this is, as they say, you really get to know people on road trips and traveling together. I think that definitely proved out. I also think that you said it at one point, man, this is true life, real family kind of dynamics going on. Which, I mean, every family has their way of communicating love and other behaviors and so forth, and they develop over many generations, and sometimes it's interesting how that kind of comes about. But of course, when other people see it from the outside, it's like, would we be like that? But if you think about it, okay, if some people look into our family, they'd probably find something just as weird. Yeah, 100%. You know? That's what is so real about it, is because maybe, the conversation is a bit different, but the feelings are about the same, and that's real life. It's not always happy sunshine, flowers and stuff like that. I think in the film industry in general, more often than not, I think the home life is looked upon a little bit nicer, unless you get the real movies like this. Now, I'm not saying there aren't movies like this out there. I'm just saying that there aren't as many. And so when we do see something that is as real and grounded, it's a little bit more shocking. It's like, oh my gosh, this is so stressful. I need to check out. I need to find my gummies. The one thing that I thought was funny was the whole poop thing, the whole constipation thing. And this is one thing I always found funny in movies. It's like, in the big car chase scenes, all of this sort of stuff is going on and everything. And I'm like, they've been doing this for 3.5 hours. Someone's had to go poop or pee at some point, and they never show you that we had to pull over really quick and let someone out during this chase scene. And this is just really grounded in that this is an aspect of their life. They have made it a thing. They openly discuss it, and it just was very grounded. I was like, okay. And then it became very philosophical at the same time. And I was like, oh my God, what did you say? The constipation of life. Yeah. Yeah. But also now that beginning title has a little different meaning now. So it was Piku, and what did it say? It said motion se he of life or emotions. Like, so constipation of motions? No. So motion se he emotion. So from motion comes emotion. So from the shit comes emotions. Well, from the process and like being stocked up. So I think, and that's like part of it too, is like bottled up emotions, right? Because you could be figuratively constipated as well with emotions, right? Without letting them out. Yeah. And so the longer you just trap these in and ignore it. Which goes back to her boss, that maybe he likes her or something. He likes her and not letting her know. Not letting her know. Yeah, definitely calling her date a jerk is a big sign that it's like, hey, I'm kind of into you and he's a bigger jerk than I am, so you should date me instead. That's the way I read into it. Yeah. But no, and I'm just saying overall in the entire movie, it's like for her, it's not having her own life and being constantly with him and taking care of him. I mean, it's her duty. Like, she sees it that way, and she's an amazing daughter for going through all of that and sticking with him. It, just like Rana said at the very end, is that he's like, no, like, people don't do that nowadays. Yeah, you know, they take the easy way out. With that is she's being
blocked up too, like bottled up, and so was he with his emotion, with everything, you know, without coming out. And so I think there's two ways to kind of look at the constipation. Yeah, I agree with you. The whole philosophy of life through poop. Yeah. I mean, this was. I don't think we went 5 minutes without having some sort of dialogue about constipation. Exactly. I think every at least 5 minutes. This is one of those drinking games that every time they talk about constipation, you have to take a shot. You have to take a shot, yeah. Man, you'd be so gone by the end of this movie. So how many pani puri out of 10? I'm going to give it an 8. I'm going to give it an 8. I think the acting was really good. All of them were phenomenal actors, actually. And we got to see Pradhanji. Yeah. Loved his curly hair. So yeah, I think definitely a good solid 8. Really enjoyed it. I think you could actually sit and do a real analysis of a lot of some of the themes and other elements to it. You know, if you tore it apart and watched it a couple of times, I think you would find some really interesting things to talk about. So yeah. So I'm also going to rate it an 8. I don't know. This typically isn't the kind of movie that is my favorite, just because it's kind of a little sad, you know, because like real life. So we talked about how it was grounded and felt real. Now for me, when I go and watch movies, I actually don't like to be reminded about reality. You know, like when I see movies as a way to escape my everyday stress in life, and when I watch a movie, I just kind of want to have fun with it. And whether it's action, comedy, horror, whatever, just get me out of the realism that I have to live day to day to day, right? So a movie like this, I'm giving it an 8 because the acting was amazing, the writing was really well done, and I'm with you. I think you could do a strong psych analogy of every one of the characters, because I think every character could have their own character study done on them to find out what drives them, what's the meaning behind the things that they say, why do they say the things that they say, why do they do the things that they do. And I think that each one of those characters will have their own unique, like, psychology, I don't know, analysis of what kind of personality they are, right? So I respect the movie in that way. Man, I don't know, like these movies really yeah, well, yeah. I can appreciate that aspect of I don't want to be reminded how life can be. Sometimes I'd much rather have something a little bit more upbeat. Like a reincarnated fly or something. There you go. Who gets revenge. Okay. Well, you guys let us know what you thought in the comments below. What rating would you give it? How many pani puri out of 10? If you like this video and you want to see more videos like these, then be sure to subscribe, hit that bell icon, turn on all notifications, or like button par thappar maro.